Vala Kishor Jaya Gopi Chita Chora Prabhu Jaya Gopi Chita Chora Prabhu Jaya Jaya Makhan Chor Jaya Jaya Makhan Chor Shri Krishna Chandra Bhagavan ki Jagat Guru Srila Prabhupada ki उपस्थित Hare Krishna, I welcome all the mellowful listeners, all the devotees, and the senior devotees of International Society of Krishna Consciousness Iskcon, who have beautifully decorated this assembly, and I would extend my welcome to all the listeners who have gathered here through the medium of Facebook, YouTube, Zoom, etc. All the listeners, and in particular for the welfare of the society at large, and on this pious occasion of Pitru or Shraddh Paksh, in reverie of their ancestors like Sitaram Agarwal, Gomati Devi, Baldev Das ji, Basanti Devi ji, Ramlal ji, Vishambar Lal ji, and our God brother Vishwa Mangal Prabhu. In remembering them all and in their reverie, the inhabitants of Seattle have organized this beautiful katha. Shri Manoj Agarwal and Nidhi Agarwal and their mother from Kathmandu, Nepal. I welcome you all on the third day of this Bhagvatam Katha. My warm welcome and our humble obeisances at your lotus feet. Radhe Shyam. So the pious time of Pitru Paksh is going on, and the pious inhabitants of Bharatvarsh perform Shraddh or Pind Dan. They offer water, etc., as veneration to their ancestors, and all these actions are called as Pitru Kriya. This Pitru Kriya was done by Chaitanya Mahaprabhu, Lord Ram, and Lord Krishna also did it. But I have a question from all of you. May I ask? I ask all those knowledgeable listeners here, please listen carefully.
Is it important to perform Pitru Kriya? नहीं मिला काटने के लिए गोविंद टीवी को हाँ तो मेरा प्रश्न ये है So my question is, कि पितृ क्रिया उत्तम महत्वपूर्ण है is it important to perform Pitru Kriya or to follow the instructions of our ancestors? Balbhadra Prabhu, are you listening? From New Jersey. और भी बहुत सारे भक्त हैं And all devotees are here. इन पितृ पक्ष में श्राद्ध के दिनों में हम पितृ क्रिया करते हैं तर्पण करते हैं So in these days we perform Pitru Kriya or veneration of our ancestors. So is it important to perform veneration of our ancestors or to follow their instructions? If we venerate our ancestors, but if we disobey them, then is it justified? And if we follow them or obey them, but we don't follow the Pitru Kriya, then what will happen? So we will start our discussion with this question. So both of these are good, but if we have to choose, then what are we going to do? So to understand this, we'll have to enter the scriptures. जिनका अवतार इस धरती पर हम जैसे मरण धर्मा मनुष्यों को उपदेश देने के लिए अपने जीवन से अपने आचरण से who the person who manifested just to show us how to live our life, the son of Dashrath, Lord Sri Ram, who was ideal personified. And where will we find far greater personality than him? If we see in his life, first of all, we need to understand Ramji is the Lord himself. And because Ramji is Lord, and as the Supreme Personality of Godhead, he knows everything everywhere, like in India, Bharat, Europe, etc. So, although he was in exile, yet wasn't he aware that his father has died or left his body? Ramji himself is the Lord, and he is knower of everything. Then wouldn't he be aware that his father is no more in this world? His father Dashrath left his body remembering him. He said Ram Ram 6 times and left his body. Goswami Tulsidas ji wrote that he got the benefit of living and dying, and he is the only one who achieved this feat. He lived for Sri Ram and he died for Lord Sri Ram. His life and death became successful. So Dashrath ji left his body, yet Ramji, to perform veneration of his father,
he didn't return to Ayodhya. So, if we consider that Ramji is omnipresent and omniscient, then it is his responsibility to venerate his father, yet he did not return to perform any kind of veneration or even to cremate his father. Although he was aware, yet he did not do it. Why? Because he was given the order by his father. Maharaj Dashrath had given 2 benedictions to Kekai, and Kekai's order were not order of Kekai alone, but of King Dashrath as well. And Lord Sri Ram went for exile to fulfill the order of his father or promise of his father. And for 14 years, he never visited any city, town. So this was the order. And on other hand was the veneration of his father. He followed his father's order rather than performing veneration of his father. Then Lord Ram's brother Bharat, who was love personified, he said, which we all should remember, this verse from Ramayan. Let's sing it together. Rupitu Matu Swami Hitabani Guru Pitu Matu Swami Hitabani Suni Mana Mudita Kariya Bali Jani Suni Mana Mudita Kariya Bali Jani उचित की अनुचित की ये विचारू उचित की अनुचित की ये विचारू धर्मु जाई सिर पातक भारू आधर्म जाई सिर पातक भारू इसलिए गुरु पीतु मातु स्वामी हितबानी सुनी मन मुदित करिय भली जानी। भरत जी के ये वचन है। So these are the words of Bharatji. When the kingdom of Ayodhya
were request when Bharatji was requested by Vasishthaji, Kaushalya and the residents of Ayodhya, and then he said a beautiful thing from his stomach. He said that the speech of our spiritual master, our father, mother, or husband, Swami here signifies husband. So these four in our relationship, if our spiritual master or our parents or our husband says something, it is for our welfare only. No, never a spiritual master thinks to harm his disciple, nor a father or mother or a husband will think to harm the person who has taken their shelter. So these four types of people always talk of our welfare, and therefore when we listen to our spiritual master or our parents or our husband, then all the advice from these four, we should respect them and try to imbibe in our life. No matter what they say and how they say, we should never feel offended. If we feel bad about them or their speech, then we will hamper our progress. And if someone's husband is telling something beneficial, and if we get offended by the same, then that wife will never be happy. Therefore, when listening to them, we should be happy and we should accept their advice and immediately follow their advice. In the second line, he says that whatever they say, we should not even judge. We should use our brain in front of the people of world, but not on advice or order of our spiritual master, parents, or husband. If a spiritual master is saying something, is it appropriate or inappropriate? Or our parents are saying something, is it good or not? If my husband is saying something, is it appropriate or not? If we even think for a while doubting them, then we will get a great sin on our head, and our righteousness or dharma will be destroyed. The order given by a spiritual master or parents or husband should be followed to the teeth, because their speech is always for our welfare. If a wife questions that, does my husband always does welfare of the wife? No, not a single husband thinks that
the wife should suffer. Sometimes it so happens that immediately what husband has said, wife cannot understand. When Gautam Rishi got angered on Ahilya and turned her into stone, that time Ahilya didn't like it, and she had a doubt that he is abusing me. But after some time, she met Ramji. She got the dust of the lotus feet of the Lord. And she turned into a beautiful, effulgent woman. Then she realized and accepted that the curse of my husband and the anger he presented on me was for my good. Had he not been upset with me, then I wouldn't have been able to see the Lord myself. So you might find it difficult what I'm saying, but these are the words from scriptures. The speech of a spiritual master is only for the benefit of his disciple. And sometimes the disciple thinks that, oh my God, what my spiritual master has said. When Narad Muni went to Kailash and he saw sons of Kuber, Dalkuber and Manigriv in an inappropriate situation. So they were cursed by him to become a tree, as they were nude at that time. But at the same time, he said that you become the tree in the veranda of Nand Maharaj. And at that time, Nalkuber and Manigriv were upset. And at that time, they couldn't understand. But when the Lord performed his Damodar Leela and he relieved them, at that time they realized that had Narad Muni not been angry on us, we won't have been able to see you. We were able to see your pastimes with our own eyes. We lived near you, and this was just because of the mercy of our spiritual master. Sometimes our parents' words are hard, and I'm telling you again and again, it is very difficult to understand. Sometimes it so happens that even our parents say something and we feel very hard, but we should listen to these words again and again so that gradually, by listening it again and again, we might understand and progress further. And there is a beautiful word here in the first line, in the second part. Mudit word is very beautiful here. I like it very much. I feel that this is the soul of the whole verse. Mudit means with happiness, not like you people in a foul mood. If a spiritual master says something with love, in jest or in angry, and if you do that, then the guru will not say anything and your progress will stop there. So even if you feel bad, still we should be ecstatic and happy.
प्रसन्नता से हमें स्वीकार करने, मुंह बिगाड़ कर मुंह चढ़ा कर नहीं। और मुदित का दूसरा अर्थ, and another meaning for this word mudit is लोक संसार में हमने दुनिया को देखा है, using my own intelligence and experience. कभी कभी शास्त्रों को सुनकर हम गुरु की बात सुन लेते हैं, माता पिता So we की या listen बात सुन लेते हैं, और to गुरु our के समक्ष, parents, माँ बाप के spiritual समक्ष, master or अपने पति husband, के समक्ष तो हम कुछ नहीं बोलते, and we don't say लेकिन उसके anything in पीछे front of them. But when he is not खपा around, रहते हैं, we दुखी दुखी become रहते हैं, unhappy, खपा रहते हैं, फिर distressed, वो चर्चा हम and दुनिया वालों upset. को करते हैं, And then we हमारे discuss it पति ने with ऐसा कह दिया, माता पिता ने ऐसा कह the दिया। whole world. बहुत सुंदर पितृ पक्ष का ये सूत्र है। So this is the fundamental principle for Pitru Paksh. So we started our discussion that the veneration of our Pitrus is important, but to obey our ancestors is far more important. And Ramji had practically shown us, and he learned it from Gurukul. Vishishtaji has taught him. सच्चा पितृ पक्ष तो हम लोग मना रहे हैं, और मेरे पीछे कौवे उड़ रहे हैं, आप देखो गोविंद टीवी, वो कौवे आपका श्राद्ध खाकर उड़ रहे हैं। आप लोगों ने जो श्राद्ध की सेवा की है, तो देखो उड़े उड़े। Crows are flying here in my backdrop. So Govind TV has arranged it beautifully. These crows are flying after eating the Shraddh veneration that you have performed here. So Vishishji said, without even considering whether it is appropriate or not inappropriate, and follows their advice or order, and accept it as his faith. But on other hand, the people who have become father, they should also be careful when giving order. I'm teaching the kids to follow their father doesn't mean that the father tells the son that, okay, get me some liquor from the shop. So for the kids, the principle is that we should follow the instruction of our parents without even considering it appropriate or inappropriate. And such people or person gets bliss and fame. And not only that, after his death, he, Amar means demigods, and Pati means the master. So such a person can sit on the throne of King Indra, the master of the demigods, Amarpati. So there are so many examples, but right now I'm thinking about Parshuram, the son of Jamdagni. So Parshuram was cutting the wood, and he collected the wood and came back to his home. When Parshuramji arrived, Jamdagni Rishi told him that just cut off the throat of your mother and of your brothers. And he did not even give it a thought. He just
kept the wood aside and cut the throat of his mother and siblings just to follow the instruction of his father. Jamdagni, Parshuram was aware that his father was glorious and he was able to make them alive. So when Jamdagni gave him the instruction, Parshuram never gave it a thought whether it is correct or incorrect. And because he followed that, his father was completely satisfied and he asked him to ask for a benediction. And Parshuramji said that please make them relive and they should not be aware that I killed them. So right now the Pitru Paksh is going on and following the veneration of our ancestors is important, but far more important is to follow the instruction of our ancestors. Till the point they are alive, we should follow them. And when they are not around, then we should perform veneration for them. If we are envious of our ancestors and after their death, if we perform veneration, then it is futile. So people whose parents are around, they should follow them and their instructions. And all these principles we learn from the scriptures like Bhagvat Gita, Bhagvatam, and Sri Ramayan. And we are extremely fortunate that we are able, or we have got this opportunity to listen to such great scriptures. So till now we have heard how Bhagavad is glorious and magnificent. In front of the eyes of Uddhavji, Lord Shri Krishna turned into Shrimad Bhagavatam. So Bhagavatam is Krishna personified, and to read Bhagavatam is like reading Krishna himself. So that is the glory of Bhagavatam. A person who listens to Bhagavatam gets benefited, but the ancestors of such person, parents are no more, and they are in the hellish planets, then also they will be benefited. That is the glory of Srimad Bhagavatam. And to understand this principle, there is a beautiful history which is the pastime of Atmadev Brahman and his son. On the banks of Tungabhadra river, there was a Brahmana called Atmadev, and he was wealthy, he had everything, and he had a wife whose wife was Dhundali. Shri Sut Goswami is sharing this pastime with Shaunakadi rishis by saying that what is the introduction of Dhundali. So he says about her, नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो
बहुजल पिका प्रायशो बहुजल पिका। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी So जिसका the नाम wife of Atmadev Brahmana, उनका her परिचय name was बताते हैं Dhundli, कैसी थी, and her introduction is described here. नित्यम। How she was अपने वाक्य every day, स्थापित करने में Nityam, पड़ी रहती थी। she was अपने worried घर में अपने माता to हो, establish पिता her हो, word. सास ससुर या अपना पति क्यों न हो, सबके सामने So अपनी मनमानी करने वाली ये she स्त्री थी। used to मतलब स्व follow her वाक्य, heart अपना वाक्य in front स्थापित of हो, बस, everyone. that's it। So मतलब Vakya आपको ये Sthapika करना है means तो that यही करना है। पति she कहेगा कि will नहीं do आज ये बनाओ, नहीं whatever बनेगा, she वो तो wants. बनेगा ही नहीं। So if a husband says, स्व वाक्य I want to eat स्थापित। something else, then that will not be prepared. आजकल कुछ ऐसी पत्नी होती हैं जो अपना So वाक्य sometimes स्थापित करती है। there are some wives हमारे देश की who, संस्कृति है कि शादी हो जाने के बाद who establish अपनी their word. सरनेम नहीं So रखती, पति की जो in सरनेम होती है ना वो our रखती है। culture, there is लेकिन a आजकल की ritual स्त्रियां that शादी we के बाद follow भी पति की the सरनेम नहीं लगाती, अपनी ही last सरनेम name लगाती of है। क्यों? their क्योंकि स्व husband, वाक्य स्थापिका नित्यम, बस उसे अपना ही स्थापित करना है। and they don't कमला माता जी change को their इसका अच्छा names. परिचय है। So they are हमारे trying to लाइसेंस देखा तो establish उसमें लिखा their है word. कि So I saw her license कोकिला and खन्ना, her name was written वही as वही मैंने Kokila देखा। Khanna. यहाँ And पे I saw it day before तो yesterday. मैं कीधु कि હવે આના ઘરવાળો And તો I said મકવાણા, that અમારો રાજકોટ her છે, husband જામનગરનો છે। is Makwana from એને પૂછ્યું Jamnagar. મેં Rajkot. કहा आपने सरनेम So I चेंज called नहीं him किया? बोले नहीं that you किया है haven't अभी। changed the last name yet. खैर वो तो कुछ डॉक्यूमेंट के चलते नहीं कर पाए, लेकिन It was समाज में हम because लोग some देखते हैं कि स्त्रियों को problem of शादी के बाद भी document yet. इतना अहम But होता है, इतना sometimes ईगो होता people है are so कि नहीं egoistic हम हमारी सरनेम रखेंगे, that we will keep our ये last वेद name. से विरुद्ध कर्म है। It is in उनकी opposition वाणी to विश्वास the नहीं होती। Vedic scriptures. सो धुंधली के विषय में कहते हैं स्व वाक्य स्थापिका So it is said सुंदरी, in regards to दिखने में Dhundlika सुंदर थी, that she was extremely beautiful अच्छे कुल में उसका जन्म हुआ था, and लेकिन she was प्रॉब्लम from क्या a थी? great family. But the लोकवार्ता problem क्रूरा, with her was लोगों की चर्चा करने में बड़ी एंगेज Lokvarta. रहती थी। She was always engaged दुनिया भर in की चर्चा discussing भारत में about इसका टाइम people, रहता था। and she used to लोकवार्ता रहता। utilize her time हमको ऐसा in नहीं लग रहा है कि ये हमारा talking about प्रवचन people. कहाँ से आ गया, मतलब हमारी प्रोफाइल Don't ये we कहाँ से feel खुल गई? that this is ऐसा our क्यों? profile? ये धुंधली की प्रोफाइल नहीं, ये तो हमारी प्रोफाइल है। This is not the profile of Dhundli, but स्ववाक्य ours. स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा लोकवार्ता, लोकवार्ता करने में ही दिन बीतता था और क्रूर थी। And she was cruel. जलपिका, Cruel और means नित्य cruel. अपने पति से विरुद्ध चलने वाली थी। And daily she used to कुछ oppose माताओं का her ये husband. अनुग्रह आग्रह होता है, पति कहेगा ठंडा खाना है तो कहेगी नहीं So आज गरम ही if बनेगा। some wives have पति special बेचारा कहेगा आज कुछ गरम खाने का नहीं, आज ठंडा खाएंगे। nature that if a husband expects रामायण, something, they will रामायण give बहुत सारी him रामायण the है, exact वाल्मीकि opposite. रामायण, गोस्वामी जी So का there are रामायण, quite a उनमें एक रामायण few आनंद Ramayan, रामायण है। and there is one इस प्रसंग that में is Anand Ramayan. आनंद रामायण में एक कथा In कही गई। such pastime एक बार is क्या हुआ, discussed in Anand Ramayan. It is said there that एक once समय upon a एक time पत्नी थी, there was a wife बेचारा पति तो परेशान ही रहता था। पति कहता था कि आज रोटी who खाएंगे, बोले नहीं whose आज wife दाल was भात ही बनेगा। who was always एक disturbed दिन पति ने because कहा कि आज दाल भात खाने she का will मन हुआ है, never listen to him. आज रोटी बनेगी। If he पति said that जो भी I कहे want to उससे eat बिल्कुल chapati, विपरीत she will चलना prepare dal rice स्वभाव था। and vice versa. So it was her nature अब to क्या हुआ, be in opposition with her अब श्राद्ध husband. का दिन आया, ये जो And the श्राद्ध time चलता of है, veneration अब श्राद्ध of का our दिन आया तो ancestors उसके came, मन में इच्छा हुई कि मैं मेरे and he पिता had a पुरुषों desire के श्राद्ध तो that करूं, I should venerate my लेकिन मैं मेरी parents. पत्नी को कहूंगा श्राद्ध But करना if है, I tell my तो वो मना wife, कर देगी श्राद्ध she नहीं will करना है। straight लेकिन away मेरे से उल्टा say वो no. करती है,
because she always opposes लेकिन me. पति जो था ना आप लोग जैसा But the बुद्धिमान था, husband was intelligent like पति you. ने उल्टी गेम खेली। So उसको he श्राद्ध करना था ना, श्राद्ध करने played के the टाइम reverse तो psychology. पति ने कहा So on the time of हम लोग श्राद्ध veneration, नहीं करेंगे, he said that we will not पत्नी perform the कहती veneration. अवश्य करेंगे। The wife श्राद्ध क्यों said, नहीं we will करेंगे? definitely do it. श्राद्ध Why तो will करना we ही not पड़ता है, perform it? श्राद्ध अवश्य करेंगे। We should do it. पति ने कहा कि देखो, The अब husband पति said, चाहता था ज्यादा ब्राह्मण बुलाए, लेकिन ये उल्टे। तो पति ने कहा हम एक ही ब्राह्मण को oh, बुलाएंगे। we will पत्नी कहती एक क्यों? only हम 5 ब्राह्मण call बुलाएंगे। one Brahman. The wife said, no, we will call 5. पति ने कहा हम लोग एक ही मिठाई खिलाएंगे। He पत्नी said ने that कहा we'll एक मिठाई prepare क्यों? one हम 5 मिठाई sweet. खिलाएंगे। She said, no, we will make अब पति 5 को तो लिंक मिल गई, sweets. उसको तो पासवर्ड ही मिल गया सीधा कि इसको कैसे टैकल करना है। पति ने कहा कि ब्राह्मण को 1 रुपया ही दान करेंगे। बोले 1 रुपया क्यों? He said हम that 5-5 रुपया we will दान just करेंगे। give 1 rupee to the brahmanas. And she said, no, we will give 5. ब्राह्मण आए, भोजन कराया, दान So दक्षिणा हुई। brahmana came and पति ने they were कहा satisfied अब ये and जो they पिंड were है offered charity. ये And हम यहीं कहीं गांव में फेंक देंगे। बोले गांव में क्यों he फेंकेंगे? said, हम this गंगा में pin, जाकर फेंकेंगे। we will throw it here in the village पति somewhere. पत्नी But she दोनों said, गए no, we गंगा will के go तट पर on the और banks of गंगा Ganga में Ji. पिंड फेंके। And अब then पिंड दान they करने के बाद स्नान करने की विधि है। पति ने they कहा देखो हम लोग put the स्नान pin नहीं in the करेंगे। Ganga पत्नी Ji. ने कहा स्नान Said क्यों that नहीं करेंगे? हम we अवश्य will not स्नान take a करेंगे। bath. Actually, it is advised to do दोनों same. स्नान करने So गए। they both बेचारे went पति से अब बेचारा अच्छे to. से मतलब दिल से बोला था, देखो देवी दूर मत जाना, वहां बहुत गहरा पानी है। दूर क्यों नहीं जाऊंगी, मैं So जाऊंगी। when they were taking a dip दूर in the जाइए holy मत, वहां तो Ganges, तैरना नहीं he आता। said that don't go far और deep, डूबी, you will drown. And the पानी wife, पी as गई, in she was इतना always in शुद्ध पानी opposition, पी गई और she डूबी। पति ने went देखा and कि she दूर से got एक drowned. पेड़ तैरता हुआ आ रहा है। And पति ने he कहा saw देवी a देखो एक tree that वृक्ष आ is रहा coming है, near to her, and he said that उस वृक्ष को, उस पेड़ को पकड़ लो, तुम बच just grab जाओगे। that tree, you will be मैं क्यों saved. पकड़ूंगी, मैं नहीं She said पकड़ूंगी। that अच्छी I will तरह से not उसको पत्नी का अंतिम hold दिन that tree, and आनंद she रामायण died में the लिखा same है। day. So this is a pastime from Anand कहने का Ramayan. अर्थ ये है कि So in धुंधली short, स्ववाक्य स्थापिता Dhundli always नित्य अपनी established बात her को ही word स्थापित करती थी। and only did whatever she desired. आत्मदेव ब्राह्मण के पास सब कुछ था, लेकिन पुत्र नहीं था, आप सब जानते So हैं। Atmadev Brahman had everything, एक but दिन he had no आत्महत्या son. करने तुंगभद्रा नदी में And गंगा he गए, went on the सन्यासी banks of मिले, Tungabhadra river उन्होंने फल दिया, to तुम्हारी commit पत्नी को suicide. खिला देना, उससे But संतान the होगा। Brahmana फल he लेकर met घर पर gave him आए, a fruit पत्नी को and दिया। gave पत्नी ने सोचा कि him a घर पर fruit आकर to क्या give it to खाऊं, her wife, घर की गाय को खिला his दूं। wife. And she thought that और 9 महीने के बाद what is the benefit of एक eating this सच्चे fruit? And she गौपुत्र gave को it लाकर to कहा कि ये मेरा बेटा है। the cow. And after बेटे का 9 months, she said नामकरण that करने का समय आया। she bought the आत्मदेव ने son फैसला from किया her कि sister and रामदास। said that बोले he ऐसा is कोई our नाम son. नहीं, ये मेरा बेटा है। So the अगर husband इसका नाम wanted the son to रखूं be तो मेरे बेटे का named नाम as होगा Ramdas. She धुंधुकारी। said that I am Dhundli, so तो my धुंधुकारी son नाम should be रखा। Dhundukari. And they named him वो फल Dhundukari. गाय माता ने खाया था, तो गाय And के the गर्भ fruit से that the मनुष्य बालक cow का जन्म हुआ। उनके had दांत eaten, गाय जैसे थे, she इसलिए उस gave बालक का birth नाम to a हुआ human गोकर्ण। with आत्मदेव ears of a ब्राह्मण के cow, 2 पुत्र हो and गए, his name धुंधुकारी गोकर्ण। was गोकर्ण he was महाभागवत called Gokarn, और and who धुंधुकारी was a महापाप। Mahabhagvat, अनेक while प्रकार का पाप Dhundukari was the करता most था। sinful. पिताजी की सारी संपत्ति को उड़ा He दिया। was burning पिताजी all the दुखी। wealth of his एक दिन father. गोकर्ण ने His पिताजी father को was उपदेश very दिया, disturbed. पिताजी क्यों कर सकते Gokarn हो, told her, देह मांसादि advised धर्म his मतं father त्यजत्वम। that why are you आप इस entangled in this material शरीर world? की इन सब आसक्तियों से Why मुक्त हो don't you जाइए detach yourself from और this भागवत का अध्ययन bodily कीजिए। relationships and take the आत्मदेव shelter ब्राह्मण of वन में Srimad चले गए। Bhagavatam? श्रीमद् Atmadev भागवतम Brahman अवश्य went पाठम, to the भागवत के forest दशम स्कंद का पाठ and किए, चित भगवत started धाम। reading Bhagavatam. मृत्यु के When बाद he भगवत धाम को प्राप्त concentrated हुए। on the 10th canto, his mind was focused दूसरी on ओर Lord जब and पिता he चले left for गए the eternal abode तो of the Lord. धुंधुकारी को On the other hand, छूटा दौर मिल गया। when the father अब तो was इसे no more रोकने वाला around, कोई नहीं। he, एक दिन Dhundukari, पिताजी became जिद all करके the रथ को more लेकर अपने घर को independent and पधारे। free. And ये one day he दृश्य brought उनकी मां देख नहीं पाई 5 और dancers to his धुंधुकारी home.
and his mother Dhundli couldn't tolerate it anymore, and she killed herself by throwing herself in a well. So these five dancers used to keep demands, and he was not earning any livelihood. So he started robbing here and there. But then he thought that rather than performing small thievery, I should perform a big robbery. So he robbed the king. And when these five prostitutes or dancers saw that he has got so much money, so they planned. And under that plan, when Dhundukari came after taking a bath, they tied him up and started putting burning coals in his mouth and tortured him to death. And not only that, these five women made a grave for him and put him there. And these five women took all the wealth and ran from there. When these women performed this action, Suchi couldn't tolerate. So Suchi said, not for every woman, but for some women, he presented this verse that sometimes some women, he said that सुजी कहते हैं स्त्रियों का बहुत बड़ा साहस that the women are very courageous and brave. So he's not talking about all the women, because we have great exemplary women as well, like Kunti, Draupadi, etc. So he says that sometimes the woman can do anything for her selfish motive. So the conclusion is that these five women killed Dhundukari and they were devoid of any mercy and humanity. It's still okay. If you read Ramayan, the wife of Dashrath, you know who was the father of Kekai? His name was Ashwapati Maharaj. And her father understood the language of animals. He had that benediction. But there was a condition that if he tells anything to someone else or shared this with someone else, then he will die. So on the window of his bedroom, he saw from the window that goat and his spouse were there, and the she-goat was upset, and the he-goat was trying to pacify her. So Ashwapati, who understood the language of the goats or animals, he saw this, and the he-goat was singing proses and poetry to pacify. तुम रोते हो तो हमें रुलाने के लिए, तुम हंसते हो तो हमें हंसाने के लिए, तुम रोते हो तो हमें रुलाने के लिए, इस कदर ना रूठो बकरी, इस कदर ना रूठो मेरी बकरी, किसी दिन मर जाएंगे तुमको मनाने के लिए। वो बकरा बोला
किसी दिन है बकरी हम मर जाएंगे। The he-goat said that one day I will die just to pacify you. But the she-goat was still upset, and he-goat was following her because he is filled with sense gratification and sex desire. तुम्हें मनाने का हुनर रखता हूं। हे बकरी, तुम्हारे रूठ जाने के बाद भी तुम्हें मनाने का हुनर रखता हूं। अगर हमारे बीच कोई तीसरा ना हो तो सारी दुनिया से भीड़ जाने का जिगर रखता हूं। ये तीसरे ने झगड़ा डाला है, यदि तीसरा न हो तो पूरी दुनिया से भिड़ने की जिगर रखता हूं। आज तुम रूठे रूठे से लगते हो बकरी, हे बकरी आज तुम रूठी रूठी सी लगती हो, कोई तरकीब तो होगी मनाने की। आज तुम रूठी रूठी सी लगती हो, कोई तरकीब तो होगी मनाने की। जिंदगी गिरवी रख देंगे हम अपनी, बस तुम कीमत तो बताओ तुम्हें मुस्कुराने की। पूरी जिंदगी गिरवी बकरा। Lastly, he said that I can do anything just to make you happy. I can give up my life in exchange of your smile. With two folded hands, he said that if I have made you angry or upset, that you can punish me. And Ashwapati King is listening all this conversation. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. See, there's some kind of technical error which will be rectified in a while. So meanwhile, हम लोग भी थोड़ा कुछ रिवाइज कर लेते हैं आज की कथा में जो हमने श्रवण किया। So प्रभु जी बहुत ही सुंदर यहाँ पर भागवत कथा के अंतर्गत इस प्रसंग को हमें आस्वादन करा रहा है विशेष, और जहाँ पर हम सब श्रवण कर रहे हैं कि कैसे कई के पिता जो कि यह वार्तालाप को आस्वादन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और मनन कर रहे हैं। सो और बहुत सुंदर प्रभु जी इसको एक हास्य रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर यहाँ पर हम ये प्रसंग श्रवण कर रहे हैं जिसका प्रभु जी जिक्र कर रहे हैं, दैट इज कि जस्ट धुंधली का ये सुंदर प्रसंग श्रीमद् भागवतम में इसकी बहुत सुंदर व्याख्या। हरे कृष्ण प्रभु, आप अपनी अनाउंसमेंट कर दीजिए, सूचना दे दीजिए। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो श्रीमद् भागवतम का यह सुंदर प्रसंग जहाँ पर हम आस्वादन कर रहे हैं पितरों की महिमा, और इसी के अंतर्गत यह धुंधुकारी का यह प्रसंग जो कि प्रभु जी श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में से इसका वर्णन करते हैं, और कैसे इस प्रसंग में आत्मदेव ब्राह्मण की यह सुंदर कथा हम आस्वादन कर रहे हैं प्रभु जी के मुखारबिंद से, और श्रीमद् भागवतम की महिमा इसमें प्रस्तुत होती है। 7 दिन जो हम भागवत यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं,
यदि हम भागवत को एकाग्रता से श्रवण करते हैं तो क्या इनकी महिमा है। प्रभु जी आगे इस कथा में और विस्तार करेंगे, जो कि हम उन्हीं से श्रवण करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम का एक सुंदर प्रसंग हमने आज प्रभु जी के मुखारविंद से श्रवण किया, और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर यहाँ पर पितृ की पक्ष की जो प्रभु जी श्राद्ध पक्ष की हम यहाँ पर कथा श्रवण की कुछ संक्षिप्त में, कि कैसे गुरु की आज्ञा का या फिर पितृ की आज्ञा महत्वपूर्ण है या उनका श्राद्ध। तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर उन श्लोकों के माध्यम से हमें रसास्वादन कराया। भगवान राम जी का ये सुंदर कथा हमें बताई कि कैसे श्री राम जी, जो कि उनके पिता दशरथ की आज्ञा का पालन कर रहे थे, और उनके पिताजी का मतलब दशरथ जी का भगवत धाम जाना हुआ, परंतु श्री राम जी अपनी आज्ञा पर, उनकी आज्ञा पर अड़ग रहे। तो बहुत ही सुंदर यह सुंदर प्रसंग प्रभु जी ने हमें श्रवण कराया कि हम यहाँ पर पितृश्राद्ध वगैरह सेवा कर रहे हैं इत्यादि, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण एक और चीज आती है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। प्राय हम देखते हैं कि हम सब जो भी हमारे मन माने ढंग से हम सेवा करते हैं, और पिता की आज्ञा का पालन करना, ये भी एक बड़ी भक्ति है। जैसे प्रभु जी ने बताया था ना कि कैसे जमदग्नि परशुराम जी के प्रसंग में प्रभु जी ने सुंदर बताया कि परशुराम जी बहुत ही सुंदर कथा, यहाँ पर उनके परिवार को वहां पर उन्होंने मार दिया उनके पिता की आज्ञा के अनुसार, और फिर परशुराम जी के ऊपर इतने प्रसन्न हुए क्योंकि उनसे पूर्व में भगवान परशुराम ने यही आज्ञा उनके अन्य पुत्रों को भी दी थी। तो उनके अन्य पुत्रों ने उनके पिता की इस आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, तो उनसे इतने प्रसन्न नहीं हुए थे, जिससे कि बाद में उन्होंने भगवान परशुराम को यह आज्ञा दी, और उन्होंने इस उनके सारे परिवारजनों की हत्या की। परंतु फिर बहुत ही सुंदर उनके पास ये जो संजीवनी बूटी होती है, जिससे कि पुनः उनको जीवित कर सके और उनको विस्मरण करा दिया। तो बहुत सुंदर ये कथा प्रभु जी ने हमें बताई कि कैसे पितरों की आज्ञा है वो उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी कि हम यहाँ पर ये सुंदर कथा रसास्वादन कर रहे हैं, जहाँ पर हम भागवत जी की महिमा आस्वादन किए। कल भी बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने कथा में बताया था कि कैसे ज्ञान और वैराग्य, जो कि गुजरात और अनेक स्थान से गुजरते हुए पूर्ण तरह से जीर्ण हो गए, भक्ति से विहीन हो गए। तो जैसे ही वृंदावन में पहुंचे तो ज्ञान और वैराग्य नाचने लगे, क्योंकि वृंदावन में प्रभाव है भक्ति का, और सुंदर कथा भी श्रवण कराई प्रभु जी ने उनकी। सो थैंक यू प्रभु जी। और बहुत सुंदर हम यहाँ पर पितृ सेवा कर रहे हैं। आज कल हमने पंचमी तिथि की सेवा की थी, और आज षष्ठी तिथि है यहाँ पर भारत में, तो उस अनुसार यहाँ पर सेवाएं प्रतिदिन चल रही है। तो अनेक अनेक वैष्णव अपने स्नेही जनों के नाम हमें यहाँ पर भेज रहे हैं, उनके पितरों के, जिनके उपलक्ष्य में हम सबको यहाँ पर सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो आइए सर्वप्रथम तो हम गौ माता के दर्शन करते हैं, और उसके पश्चात जो सुंदर सेवा हो रही है, हमारे जो परिजन है, ये जो अमृत चर्चा परिवार के स्नेही जन है, अपने पितरों के लिए बड़े ही भावुक भक्त हैं, सुंदर भक्त हैं, जो कि आज्ञा पालन भी करते हैं, साथ ही साथ अपने कर्तव्य में भी निष्ठ है। तो ऐसे भक्तों के पितृजन निश्चित भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं और भगवान की सेवा में लगते हैं। So let's have a darshan of Shri Radha Govind Goswami, where we are continuously seeing the wonderful service seva which is going on throughout this Pitru Paks, and then we'll have the names of, we'll remember the devotees, हमारे जो अमृत चर्चा परिवार के सभी भक्त हैं, स्नेही जन, इन्होंने सेवा को किया है, उनके नाम को भी हम स्मरण करेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत ही सुंदर सेवा हमारे अमृत चर्चा परिवार के सभी स्नेही जन ने पार्टिसिपेट किया है। So we'll just go through that seva, and then we'll get to know that who is that fortunate devotee जिनके परिवारजनों ने यहाँ पर सेवा में सहयोग किया है। So
हमारे पंचमी तिथि के जो भक्तगण हैं जिन्होंने इस सुंदर सेवा में सहयोग किया है, श्री राधा गोविंद गौशाला में हमारे हितेश भाई वाजा, उनके परिवार के जिन्होंने हमारे रीना माता जी के परिवार के भक्तों ने उनके पितरों के लिए सुंदर सेवा की है। और साथ ही साथ हमारे हृदयलाल मल्होत्रा जी, और उसके साथ महेंद्र भाई शंकर भाई पटेल और राम प्यारी मल्होत्रा जी और शिव कुमार राजस्थ, अरविंद भाई कांजीदास पटेल, ये सभी वैष्णवों ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने हेतु या उनकी श्राद्ध सेवा हेतु बहुत सुंदर सहयोग किया है, जो कि सराहनीय है। क्योंकि सभी वैष्णव भक्त अपने जीवन में भी इतनी सुंदर भजन भक्ति कर रहे हैं, और भजन भक्ति के साथ साथ यहाँ पर भगवान की सुंदर सेवा भी कर रहे हैं। और विशेष इस पितृ पक्ष में वैसे भक्त जुड़े हैं इस प्रकार गौ सेवा के माध्यम से तथा वैष्णव को प्रसन्न कराकर उनको भोजन देकर पितृ पूजा कराते हुए उन सभी वैष्णव को अपने पितृजनों को तार रहा है। So very grateful to this family member of this पितृ जिन्होंने यह सुंदर सहयोग किया है और यहाँ पर भजन करते हुए इस प्रकार अपने जीवन को तो वह कृतार्थ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके पितरों को भी तार रहे हैं। तो धन्य है वे सभी परिवार के जन जो कि इस प्रकार सेवा में जुड़े हैं। और हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे श्री राधा गोविंद गौशाला की गौ माता से तथा हमारे उन वैष्णवों से और श्री राधा श्याम सुंदर से भी कि इन सारे परिवारजनों को भी आप अपनी अहेतु की कृपा दीजिएगा, जिससे कि वह इस प्रकार निर्विघ्न भजन साधन कर सके और इसी प्रकार सेवा में संलग्न रहे और लोगों को भी इस प्रकार प्रेरित करे, जिससे कि उनके भी जीवन में वह भी इस प्रकार के कार्य को कर सके। सो वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच। और विशेष आभारी है हमारे अग्रवाल परिवार के स्नेही जनों को, और जिन्होंने ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया है, जिसमें हम इस प्रकार प्रतिदिन गौ सेवा कर रहे हैं सुंदर, और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर भागवत कथा का रसपान भी कर रहे हैं। सो हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार भक्ति में उनको और अधिक प्रेरणा बल मिले, जिससे कि वह इसी प्रकार के कार्यक्रम को और अच्छे से और आयोजन करते रहें, जिससे कि हम सब भी कथा कीर्तन श्रवण करते हुए अपने जीवन को निर्वाह कर सके। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप सब भी इस प्रकार अपने पितृजन स्नेही जनों के नाम हमें दे सकते हो अभी भी, बिकॉज वी आर स्टिल डूइंग दिस सेवा वेयर यू कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। और इसके लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं ऑन हमारे जो नंबर है इस पर, विच इज 7567545555। और सारी ये जो सुंदर सेवाएं हैं हम प्रतिदिन कर रहे हैं, जिसकी हम एक बहुत ही सुंदर क्लिप्स बनाने वाले हैं, जिसमें हम उन सारे पितरों की जो हमने सेवा की है उसकी भी दर्शन करेंगे और इस प्रकार उनकी कृपा के भागी बनेंगे। सो यहाँ पर हम पितृश्राद्ध सेवा पिछले 10 तारीख से ये प्रारंभ हुआ और आने वाली 25 सितंबर तक चलेगी। तो यदि आपने अभी तक अपने स्नेही जनों के नाम हमें नहीं दिए हैं, आप इसे जल्द से जल्द दीजिएगा, जिससे कि हम उनके बिहाफ में भी ये सारी सेवाएं कर सके। और विशेष हम देख रहे हैं कि हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं आप सबके सहयोग से, और इन वैष्णव को भोजन प्राप्त करा पा रहे हैं, और विशेष उनके लिए सुंदर पितृमोक्ष पूजा भी कर पा रहे हैं, और भागवत पाठ जो कि हम यहाँ पर निरंतर पाठ कर रहे हैं, और साथ ही साथ भागवत कथा भी हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं, जिससे कि उनके जीवन में भी ऊर्ध्व गति की ओर गमन करें। ऐसे पितरों के नाम आप हमें अवश्य दीजिएगा, जिससे कि हम उनके लिए सेवा कर सके। और आप सब भी अवश्य जुड़िएगा, जो कि आप अपने पितरों के नाम हमें इस नंबर पर दीजिएगा ऑन 7567545555, या हमें इस नंबर पर कॉल करके भी आप इस नंबर को दे सकते हैं, नाम को दे सकते हैं, विच इज 2012150913। इन दोनों नंबर के माध्यम से आप हम सबको
अवश्य अप्रोच कीजिएगा जिससे कि हम उनके लिए सेवा कर सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और once again thank you so much to this wonderful family because of which we are getting this wonderful opportunity to serve Gomatas and all the Pitrus and hearing this wonderful Bhagvat Katha from the Prabhuji's Mukharve. So आइए हम कुछ क्षण के लिए भगवान के कीर्तन का स्मरण करते हुए इस कथा को प्रभु जी के मुखारवे से प्रारंभ करें, श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर,
की दे परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाई माने मेरो मनवा। सात शेर की करू कढ़ैया, 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 सात शेर की करू कढ़ैया। सात शेर की करू कढ़ैया। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमाऊ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाई माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, 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 श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो
श्याम कुटी के दर्शन करके, श्याम कुटीर के दर्शन करके, श्याम कुटीर के दर्शन करके, श्याम कुटीर के दर्शन करके, श्याम कुटी के दर्शन करके, श्याम कुटीर से दर्शन करके, श्याम कुटी के दर्शन करके, श्याम कुटी के दर्शन करके, मैं तो राधा, मैं तो राधा कुंड में नाऊ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, ये तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, 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 मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. So seems that we are having issues that is right now unable to resolve. But yes, we have some time that अगर आपके कोई प्रश्न है इन कथा से related, so I'll try my level best, to answer those questions. So कुछ समय है हमारे पास before we go. Otherwise, I can ask questions and taste that आप लोगों ने कैसे ये कथा सुनी है. Let's see. तो बहुत सुंदर हम यहाँ पर 3 दिन से लगातार इस कथा को श्रवण कर रहे हैं. Due to some reason right now, Prabhuji is unable to connect. So by the time, let's see if Krishna wants us to hear more katha. We will take some time and we'll try to revise this katha what we have heard till now. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna. तो पिछले 3 दिन से हम यहाँ पर लगातार यह सुंदर भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसमें पितरों की महिमा, हरि कथा और हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम श्राद्ध महिमा, पितृ महिमा और साथ ही साथ यह भागवत महिमा श्रवण कर रहे हैं पिछले 3 दिन से. और तो मेरा प्रश्न है अभी डे 1 से, इफ एनीबडी हैज कोई किसी को याद है तो आप प्लीज अपना हाथ रेज कीजिएगा, जिससे कि मैं उनको अपॉइंट कर सकूं. सो पहले दिन हमने भागवत कथा जब ये शुरू हुआ, विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल बिगिनिंग ओनली, क्योंकि फ्रेश वाली तो सबको याद होगी ही ऑब्वियसली. तो पहले दिन प्रभु जी ने भागवत कथा कही यहाँ पर, जिसमें प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर पितृपक्ष की व्याख्या बताई, जिसमें बताया था कि कैसे यदि हम भजन भक्ति करते हैं तो उससे भी हमारे पितरों का उद्धार होता है. तो वहां पर प्रभु जी ने नारद भक्ति सूत्र का से कोट किया था. सो एनीबडी, कोई किसी को स्मरण है नारद भक्ति सूत्र में से प्रभु जी ने कौन सा श्लोक कोट किया था, एंड दैट वर्स नंबर पर्टिकुलरली, एंड द नेम ऑफ दैट वर्स. ओके, बहुत सारे भक्त. ओके, please raise your hand in the participant box so that I can okay. So yes, we have a Mataji from Poonam Mataji from Singapore. I'll allow her to kindly unmute yourself and give the answer.
यस माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पुनः माता Hare जी। Krishna, Hare Krishna. Yes. Yeah, the verse was Lok Vigrah Hamuntascha Narad Sthai Sthitasta cha Vidhi Srave Kutah Priti Sanyogah Kutra te Sah. इसमें बता रहे थे कि नारद जी को यहाँ लोक विग्रह कहा गया है। उसमें भी प्रभु जी ने काफी अर्थ बताए थे कि वे साधारण लोगों का श्रृंगार कर देते हैं भक्ति के द्वारा। यहाँ ध्रुव जी को सजाया दिया गया है नारद जी के द्वारा। उनका दूसरा अर्थ है नारद मुनि प्रचार विस्तार फैलाव करने वाले हैं, भक्ति का प्रचार, गोविंद का प्रचार। तो इसमें यहाँ पे ये कहा गया है कि नारद जी को लोक विग्रह किस लिए कहा गया है, ये दूसरा अर्थ है। और तीसरा अर्थ ये बताया गया है कि डीटीज या विग्रह जो मूर्ति होती है उनको उसको भी लोक विग्रह को तीसरा अर्थ डेटीज या विग्रह के से तुलना किया गया है, जिसका विग्रह लोगों के लिए आशीर्वाद देने के लिए यूज होता है। चौथा अर्थ ये है कि नारद लोगों में कलह या झगड़ा करवाते हैं, उसको बोलते हैं। चौथा अर्थ मतलब विग्रह करवाना, मतलब ये नारद भगवान लोगों को में कलह झगड़ा करवाते हैं, इसलिए इन्हें लोक विग्रह कहा गया है। ये लोगों के कल्याण के लिए ये करते हैं। अगर ये झगड़ा भी करवा रहे हैं वो भी लोगों के कल्याण के लिए करवाते हैं। जैसे शिव पार्वती के बीच में उन्होंने झगड़ा करवाया था, कृष्ण अर्जुन के बीच में भी, वो कुरुक्षेत्र में जब वो बीच में लेके गए थे उस समय भी जो झगड़ा हुआ था, भगवान उनके बीच में वार्तालाप के थ्रू काफी झगड़ा हो गया था। तो ये सब काफी एग्जाम्पल्स प्रभु जी ने दिया था कि किस तरह लोक विग्रह को नारद जी से तुलना किया गया और उसके अर्थ बताए हैं कि उसके एक अर्थ नहीं 4 अर्थ प्रभु जी ने दिया था। यही मैं कहना चाहूंगी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच भूल माता चूक जी। हो तो माफ करेगा। नहीं, दैट वाज वंडरफुल माता जी। आपको काफी कुछ स्मरण रहा है उस दिन की कथा से, एंड प्रोबब्ली आपने कथा का उत्तर पूरी कथा में ही दे दिया, मतलब एक प्रश्न का उत्तर एक कथा में दे दिया। सो वी विल होस्ट योर कथा एज वेल इन द कमिंग डेज। ओके, सो विल रिक्वेस्ट प्रभु जी टू काइंडली प्लीज लीड दिस कथा। हरे कृष्णा। तम देहम मुमुर्चु गते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातम तद रहस्यम तु केनापिदम तथैव च। शिशु जी कहते हैं कि स्त्रियों में बड़ा साहस होता है। Shishuchi says that in some women और इस बात there को is समझाने के लिए a courage, मैं रामायण का एक प्रसंग सुना रहा था। and I was to explain this further, I was giving an example from Ramayan that Ashwapati, जो पशुओं की भाषा the father of Kekai Mata, खिड़की के पास खड़े रहकर बकरी और and बकरा की चर्चा सुन रहे थे। and who could listen बकरी रुक to, गई थी और बकरा उसे मना रहा था। so he could listen to the animals and understand that, and he saw from the window that a she goat and he goat were fighting with each other, and the she goat was upset from the he goat and he was trying to pacify her. हर बात पर जो तू मुझसे रूठ जाएगी, सच कहता हूं याद रखना, मेरी तो दुनिया ही टूट जाएगी। सच So he कहता says that I'm truly saying that if you don't agree with me, then इतना बातें बोला, I will lose my life. तो मान जाती लेकिन वो बकरी नहीं मानी। He was trying to convince her. Had there been a woman, she would have pacified. But this goat was adamant. बकरी नाकाम है मेरी सब कोशिशें तुम्हें मनाने की, All my efforts to pacify you. रूठ जाने की। And from where did you learn this art of getting upset? रूठ जाने
इस प्रकार से I बकरी quit रूठ कर आगे trying चल to गई pacify you. और बकरा उसके पीछे पीछे घूम रहा था। महाराज अशोपति अपने मन में सोचे And Lord कि ये King कैसा Ashupati was बकरा thinking, है what kind जो of पत्नी में आसक्त हो गया है, goat he is. जो He's उसके so पीछे attached पीछे to पागलों women की तरह घूम रहा and है। is going तो ये behind her सोचते like a हुए mad महाराज person. अशोपति थोड़ा सा हंस रहे थे, And जैसे आप he लोग हंस रहे हो, started laughing as ऐसा you मजाक all are करके हंस laughing. रहे थे। और उसी समय महाराज अशोपति की पत्नी पृथ्वी देवी वहां पर आई, And his माने wife कैकई की माता। Prithvi Devi came, who's the कहा mother कि of तुम हंस Kekai क्यों Mata. रहे हो? And she said that, why are you अशोपति ने laughing? कहा कोई बात नहीं, मैं Ashupati हंस said रहा हूं। that नहीं 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 नहीं, it's nothing सच important. सच बताओ She तुम्हारे said that हंसने का कारण you क्या है? need to tell me honestly why you were अशोपति ने laughing. कहा देवी कोई कारण नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Ashupati said that there is लेकिन no तुम हंस issue, क्यों रहे हो but मैं जानना why चाहता are हूं। you laughing? I need to know. बोले वो बकरा बकरी कुछ चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे मुझे He बताओ। said that they were the she goat and he goat were कैकई की discussing माता something. जानती थी मेरे So पति को श्राप है, Kekai's वो mother या तो मर knew जाएगा, that लेकिन he वो हंस क्यों had रहा था this ये जानना curse, था। but and he will die if और he अभी reveals. अभी महाराज And अशोपति yet उस बकरे के ऊपर कमेंट दे चुके हैं he कि ये had, बकरा भी कैसा है and कि पत्नी he, को मना नहीं just करता, now he पत्नी had को given कुछ a कह comment नहीं that सकता। अब he, वही what प्रॉब्लम kind उसके of जीवन में he आई। goat is वो कहने so much लगे कि attached that मुझे he is not बताओ able कि to तुम क्यों tell हंस रहे anything थे। to बोले वो बकरा he बकरी goat. चर्चा कर रहे थे। And now नहीं नहीं क्या similar चर्चा कर situation रहे he थे। is facing. So he says that और फिर they were अंततः discussing महाराज something, अशोपति ने and at end बकरे बकरी की बात बताई he और told उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। his wife about their conversation and he died अपनी the same बात day. निकालने के लिए, इस Just बात को जानने के लिए to इस know रानी ने अपने पति की बलि चढ़ा दी one thing, और she इसी लिए sacrificed her सूत own जी ने husband. कहा And that is why एवं Suchi विधिवत refers कृते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातम तद रहस्यम तो केनापीदम तथैव च। तो इस प्रकार वह साहसिक नृत्यांगना धुंधुकारी को मारकर चली गई। similarly, धुंधुकारी the समय से पहले ही these मरा, women have killed इसलिए मरने के बाद Dhundukari, प्रेत and बन गया। as he died before प्रेत his योनि में बड़ा कष्ट भोगतने लगा। time, गोकर्ण ने गया में जाकर so श्राद्ध he किया, एक दिन घर became पर a आया spirit तो आत्मा भटक रही थी, and पूछा कौन he प्रभु was तुम्हारा भाई distressed धुंधुकारी and roaming, प्रेत and योनि को प्राप्त हुआ his हूँ, brother कृपया Gokarn मुझे had उद्धार performed कीजिए। veneration for him in Gayaji, yet he was not freed, गोकर्ण महाराज and he met सूर्य his देवता से निवेदन brother करते हैं, इस and बात को said that बताइए I am yet कि not मैंने जो free. पाप किया है, So मरने Gokarnji के बाद प्रेत बना है, stops Lord उसका Sun उद्धार कैसे होगा। and asks, मतलब how am I वास्तव going कहते हैं to कि ऐसे पापी free पतिता or को तो liberate my brother? And Lord श्रीमद् Suryadev said भागवत that कथा the सप्ताह only श्रवणम cure कुरु, for such a भागवत person कथा का is श्रवण करने a से हो जाएगा। weekly or a 1 गोकर्ण week's वक्ता बताते हैं, katha गांव वालों ने from आयोजन Srimad किया, Bhagavatam. So the धुंधुकारी villagers पेड़ के नीचे organized this बांस katha, बनाकर बैठ गया। and Dhundukari कहते हैं कथा took the जब shelter सत्र in a समाप्त होता, bamboo बांस की एक and ग्रंथि टूट जाती, which had 7 knots, दूसरा and सत्र each समाप्त होते ही day दूसरी ग्रंथि टूटती, each knot was ऐसे getting 7 दिन destroyed, तक कथा समाप्त and in हुई, 7 सातों days ग्रंथि these टूटी 7 knots और were धुंधुकारी destroyed, का प्रेत and भगवत पार्षद रूप धारण करके he took the आकांत eternal द्वारा form भेजे हुए विमान में and बैठकर went to the वैकुंठ eternal धाम abode चला of the गया। Lord in his सूत जी कहते हैं, वेद eternal व्यास मुनि लिखते vehicle. हैं कि धुंधुकारी And प्रेत था Vyas Muni और प्रेत writes होकर and भागवत सुना Suchi तो describes उसका उद्धार हो गया। हम प्रेत तो that नहीं हैं, हम if मनुष्य हैं, a हम यदि भागवत सुनेंगे तो soul हमारा उद्धार क्यों or नहीं a होगा। ghost can धुंधुकारी ने दुखी listen होकर कथा सुनी Bhagavatam and और get उनका relieved उद्धार हुआ। or हम liberated, आनंद से then हैं, what about भाव us? से We are कथा humans, सुनेंगे we can तो हमारा listen. उद्धार He क्यों नहीं was होगा। distressed when he heard this धुंधुकारी ने katha, जीवन but भर we पाप can take किए, pleasure in कथा listening सुनी Bhagavatam फिर भी and उसका get उद्धार liberated. हुआ। हमने पाप तो किए हैं, We all also have धुंधुकारी sinned जी ने like तो him, पाप नहीं किए। but we haven't sinned like him. और कथा कही गोकर्ण ने And और the उद्धार हुआ धुंधुकारी। katha was spoken by सो हमारे
Gokarn. So even if our ancestors are not alive, as Gokarn Maharaj said the Katha, and his brother Dundukari was liberated. Similarly, if we listen to the Katha, then our ancestors will also be liberated or will get the benefit. So in this pious Pitrupaksh, if we want the welfare of our ancestors and for our benefit, then we should organize Bhagavad Katha and we should listen to Srimad Bhagavatam. In conclusion of this pastime, by saying the glories of Srimad Bhagavatam, Sut Goswami says, पाशहस्तं वदन्ति यमा किल तस्य कर्णमूले परिहर भवत् कथासु मत्ता। श्री सूत जी कहते हैं, श्लोक समझ Sutji announces, just understand this verse, पाशहस्तं वदति यमः किल। किल किल माने बहुत पहले, Kila means long back, तो किल बहुत पहले, यमः माने यमराज, Yamaha means Yamraj, सो बहुत पहले the god or controller of स्वपुरुष heaven and hell, अपने दूतों के पाशहस्तम विक्ष, अपने दूतों of के hell, हाथों sorry. में रस्सी देखा, And he saw rope in his associates and he asked, "Oh, Yamdutas, where are you going?" They said that you have given us the work, so we are performing our duty. We are going to earth and to bring all those who are about to die, all the sinners who are supposed to be in hell. So they were approaching Mother Earth, and Yamraj said something. What Swapurusham means he said to his associates after seeing Pashahastam in their hands, the rope. And where did he sit? Where did he sit? Karnamule, that is in their ears. किसी को बताना मत, तो कोई सुने नहीं ऐसे, कर्णमूले। इसका अर्थ यही हुआ ना, कर्ण तस्य कर्णमूले, उनके कर्ण में कहा। सीक्रेट बात है, किसी को कहना मत। क्या So कहा? it's a secret. परिहर, And what did he say? Parihar लोगों से तुम दूर रहना, बाकी सब means that you should keep yourself away उन लोगों से दूर रहना, from whom? From whom? कथासु मत्तान, Bhagvat Kathasu Matan. मत्तान, जो भगवान की कथा में Those who मतवाले हो चुके हैं, are मत engrossed जिसको in कृष्ण कथा Srimad में Bhagavatam नशा चढ़ Katha, गया है, who are intoxicated by the pastimes of ये Lord Shri अमृत Krishna, चर्चा वालों की तरह। like the participants in Amrit Charcha. कथा में कितना भी व्यवधान आ जाए, कुछ Even if we have so much technical technical disturbance or error, 5-10 मिनट बीत गई, लेकिन फिर भी सब लोग so there were टिके रहे। 5-10 people, but मैदान still छोड़ के people कोई were नहीं there गया। मैंने सोचा and कुछ nobody लोग left. गए होंगे। I thought that maybe 5 few इसका will अर्थ जो leave. बनता है, So that आप means लोगों को नशा हो चुका है, you are मतवाले हो intoxicated चुके by हैं। the pastime of the Lord तो यमराज जी क्या and you are कहते हैं engrossed. कि वदति यमः, यमराज जी ने कहा And Yamraji is telling his किसको associates छोड़ देना, that किसको छोड़ देना, you should leave भगवत कथासु मत्तान, जो the भगवत कथा people में who मतवाले हो चुके हैं, are जो रोज engrossed अमृत चर्चा में
in Bhagvat Katha and who log in Amrit Charcha and listen the mellows of Srimad Bhagavatam with so much love and mellows. So this is the verse from Bhagavatam Mahatmya and very clearly describes. And if his associates us that we were going to pick people also. કારણ કે હવે એના વાળ પાકી ગયા છે. તો क्यों क्यों Why? कथा सुनने वाले के पास क्यों नहीं जाना है? Why we should not go to the person who is listener of Srimad Bhagavatam. कृष्ण की कथा सुनता है, भागवत कथा सुनता है और कथा सुनते हुए उसमें मत हो जाता है, मतवाला हो जाता है, तो उस भक्त को भगवान A devotee of the Lord is accepted by Lord as himself. So a person who listens to the Bhagavatam is considered as his own because he becomes and he is considered as his own by. So we should not touch a Vaishnava. And how can we consider a person to be a Vaishnava? A person who is engrossed in Shrimad Bhagavatam Katha. A person who is engaged and blissed and feel ecstatic in Bhagavatam, the Lord serves them. And the live example is in Ramayana. In Anand Ramayana it is mentioned, Ramji was sitting in his assembly and he got a news that his minister Sumantra ji has left for the eternal abode of the Lord. And Ramji was distressed because he had always considered him as his father. So Ramji started running towards her home and everybody started running after him. So when he reached, he saw that Sumantraji has already left his body. Ramji was filled with sadness and sorrow. And he told his family to and asked for his horoscope. And he told the astrologers to just see when is he supposed to die. And it was destined that how he was supposed to die after 9 days. So why he was taken before that? So people said that anyways he was going to die. So Ramji said that how can he leave 9 days before? He immediately followed the Yamdutas, the associates of Lord Yama. And Ramji stopped them and asked him, why are you taking Sumantraji? They said that it's about to die. He said that I have just read his horoscope. He is not destined to die yet. He still has 9 days to live. How could he take him? How could you take him 9 days? Even Yamdut have all the records. And his associate Chitragupt. Do you know the meaning of Chitragupt? Gupt means secret and Chitra means photo. He keeps all the photos and videos of whatever sins we perform. Is always recorded secretly by him. That is why his name Chitragupt.
It's good that he doesn't viral these videos. He keeps them with him. And when we die, he shows us. लेकिन हमारे हम सब के चित्र, हम सब के जो चित्र विचित्र जो कर्म है, So all the रखते हैं चित्र गुप्त। different जो का होता है, राम जी ने कहा 8 दिन पहले क्यों, karmas that we have performed is recorded, and तब वो यमराज के दूत कहते हैं कि राम the जी, associates of सुमंत्र Yamji जी का जन्म हुआ, said तब आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। that when Sumatraji was born, you तो जन्म don't होने even से know आपका when he, जन्म नहीं हुआ था। you're not even born when सुमंत्र जी he के was जन्म born. के समय एक घटना घटी थी। So at the time of his birth, there was सुमंत्र जी an event that की माता happened गर्भवती थी, when his mother was और उसके pregnant, गर्भ से बालक निकल गया और and एक विषम परिस्थिति में फंसा। he left the womb of his mother, 9 दिन पहले ही but हो चुका था, लेकिन पृथ्वी पर वो 9 दिन के बाद गिरा। so somehow there was some जब situation where जहां बालक he होता है, already वहां से took बालक birth, नीचे चला गया, लेकिन पृथ्वी but पर नहीं आ रहा था, he और उस माता को didn't बड़ा कष्ट हो रहा था। और rec- उस समय he couldn't ब्राह्मणों को, come out पंडितों को in the बुलाकर earth, बड़े-बड़े वेदों के and मंत्र the बोलने mother लगा। was in और distress, उस वेदों के and मंत्रों they का उच्चारण करने से 9 chanted दिन the के बाद verses, वो बालक and धरती पर गिरा। after 9 days that child came on और earth, इसलिए फिर उसका नाम हुआ and सुमंत्र। that is why he was सुंदर named मंत्रों के Sumantra, द्वारा माता की a पीड़ा दूर person हुई, और ये जिस विषम whose परिस्थिति birth में was फंसे हुए थे, born वहां से नीचे and गिरे। escaped इसलिए because तो of इनका the नाम chanting सुमंत्र of हुआ। beautiful verses, तब and भगवान राम जी due to प्रकट which होते हैं his mother कि got देखो, relief from the pain. माँ के गर्भ So, से आगे पीछे बच्चा हुआ है, so और Ramji कब says हुआ that ये मायने नहीं रखता, वो it is पृथ्वी not पर धरती पर important कब गिरा ये मायने रखता है। when he got तो out of तुम the womb of आप his उस डेट mother, को पकड़ कर but the खड़े हो date कि गर्भ से बाहर कब important आया, date is when लेकिन एक्चुअल he comes पृथ्वी on धरती the को जब earth. स्पर्श करता है बालक, Until वो and दिन की unless तारीख he मानी जाती touches है। the earth, अभी when इसका he सार touches ये the है, earth, that अभी day is सुमंत्र की पीड़ा considered के as घर his में 9 birth date. दिन बचे हैं। So that means चलो, that he still इसको has वापस 9 बुलाओ। days to live. So you should return राम जी him ने right now. यमदूत को कन्विंस किया, और यमराज के दूत He ने convinced the सुमंत्र जी associates को of दिया कि Yama, राम जी सुमंत्र and को he लेकर was returned, अयोध्या में वापस Sumantraji, आए। and he brought him लेकिन back 9 दिन to के बाद Ayodhya. जाना तो था, But after लेकिन 9 अब days, क्या he was किए, supposed to die. But और what he did, सुमंत्र जी ने निर्णय लिया कि 9 दिन बचा है, Sumantraji ये 9 decided दिन that में now these राम 9 days, पारायण करूंगा, I will राम listen कथा का to श्रवण करूंगा। Ram Katha. सुमंत्र जी ने 9 दिन राम And पारायण की, for 9 और days he 9वें दिन heard, साकेत से भगवान and के on the पास 9th जाए, day, और his सुमंत्र जी को associates from साकेत Saket वैकुंठ धाम came, में लेकर and चले। he took और him उसी समय से to राम Saket, and पारायण from 9 time दिन का विधान बन गया। it is भागवत said 7 that दिन होती है, the और Ramayan राम Katha should be पारायण done 9 for दिन 9 होता है। days. ये सबसे पहले Bhagavatam सुमंत्र is जी ने performed for प्रारंभ किया। 7 days, and it all started from Sumantraji. सो कुल मिलाकर यहाँ पर श्री सूत जी कहते हैं So Suchi says कि वदति यमः, स्वयं यमराज जी अपने दूतों को कहते हैं कि भगवत कथा सुमत्तान, जो that भगवान की कथा Yam में मतवाले हो चुके हैं, himself tells his उनका associates सत्संग कभी मत not to touch the devotees क्योंकि of the वो Lord who are विषम हो engrossed in चुके हैं। listening to Bhagavatam सो हम सब because they belong to बड़े Lord सौभाग्यशाली Vishnu. हैं कि इस So प्रकार we are भगवत extremely कथा का fortunate श्रवण कर रहे हैं that we और जीवन को are धन्य listening बना to रहे हैं। Bhagavatam आइए and भागवत महात्म्य यहाँ पर benefiting समाप्त from it. हुआ। श्रीमद् So this भागवत को यदि प्रारंभ किया Mahatmya जाए ends here. So if we start तो Srimad श्रीमद् भागवत Bhagavatam, के प्रथम 3 श्लोकों में the श्री first व्यास 3 जी verses, मंगलाचरण करते हैं। in first 3 verses, Vyasji is भागवत के प्रथम श्लोक doing में the व्यास Mangla मुनि, Charan. पिछली कथा में हमने सुना, राधा और कृष्ण को प्रणाम करते हैं। So in the first verse, in the previous Katha, we heard फिर दूसरे how श्लोक he में prays or श्रीमद् venerates भागवत के Radha विषय and वस्तु Krishna. का वर्णन करते हैं And in the कि भागवत second में verse, क्या क्या सब्जेक्ट है, he describes the subjects क्या of कहना चाहता है। Bhagavatam. What तो actually कहते हैं Bhagavatam wants to reveal. निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किम वा परे ईश्वर सद्य ही अवरुद्धते कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत में
कैतव in धर्म Srimad Bhagavatam किसी भी प्रकार का कपट describes श्रीमद् भागवत में आत्मा के धर्म का वर्णन किया गया the भागवत principles for the soul and how to relieve ourselves from the three modes of material nature, गोस्वामी ने इसे कहा and there is no corruption in और that. तीसरे श्लोक में व्यास मुनि भागवत सुनने के लिए निमंत्रण देते हैं And in the third verse, he invites people वेद रूपी वृक्ष का to पका हुआ फल listen नीचे आया है to Bhagavatam, और सुखदेव saying गोस्वामी ने that इसे this जूस is बनाकर the हम सबको पिलाया है fruit of सो all the पिबत Vedas भागवतम and हे मनुष्यों which इस भागवत को was पियो given as nectar or पिबत juice भागवतम रसम ये रस है by तब तक Shukdev कालेय Maharaj. जब तक मृत्यु ना आ जाए And मृत्यु पर्यंत इस we भागवत should को listen पियो to Bhagavatam till the point we die. और फिर भागवत कथा शुरू होती है And then the Bhagavatam starts in नैमिषारण्य Naimisharanya. ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम समम नैमिषारण्य क्षेत्र में In Naimisharanya, शौनक आदि Shaunakadi 88,000 sages, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे 88,000 sages were performing fire sacrifice or yajna 1000 वर्ष के यज्ञ का अनुष्ठान for कर बैठे थे peace of the और world उसी समय उनको पता for चला 1,000 years, and at that कि time सूत गोस्वामी they वहां realized खड़ा that है Sud Goswami has arrived. जैसे ही सूत गोस्वामी हमारे And क्षेत्र as में soon आए हैं ये सुना as they सारे heard ऋषि मुनियों ने that यज्ञ को Sud बंद कर Goswami दिया has arrived, they stopped बोले performing सोचा the ऐसा yajna भागवत or कथा homa. अभी प्रेम यज्ञ करेंगे और जब They said प्रेम that यज्ञ now होगा we तो will ये perform the होम love हवन अग्नि वाले sacrifice, यज्ञ की कोई जरूरत so नहीं we don't need a fire sacrifice. यज्ञ को बुझा दिया यज्ञ की So अग्नि शांत की सूत जी का they स्वागत pacified किया the fire of the सूत जी yajna को उच्च आसन पर बिठाया and उनकी पूजा gave आदि करके Sudji ऋषि मुनियों ने a सूत perfect जी को 6 place to प्रश्न पूछे sit and वो 6 के 6 प्रश्न एक offered श्लोक में obeisances आपके to सामने him उपस्थित and asked 6 questions that were presented किम श्रेय in the verse. शास्त्र सारकः स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मम कह शरणम गत भागवत में मत खोजिएगा ये भागवत का श्लोक नहीं है ये 15 श्लोकों को सिंक्रोनाइज करके This is not the verse from Bhagavatam. एक श्लोक में These आचार्य ने अपनी टीका में 15 लिखी है तो आपको सरल पड़े इसलिए मैंने verses आपको ये were बताया श्रीमद् भागवत का बेस joined in one verse by one Acharya. And to make it easier, I have presented it in this form. So Bhagavatam is standing on 6 pillars, and these 6 pillars are these questions asked by the sages of Naimisharanya. Satyabhama, take the photo of the word, but also take my picture as well. So श्रीमद् भागवत का प्रथम प्रश्न है किम The श्रेय first question ऋषि मुनि कहते हैं of Srimad Bhagavatam is Kim Shreya. आत्मा का श्रेय इस संसार में सभी जीवों का श्रेय माने कल्याण हम So he's asking that how the humans will be benefited and or what should we do for the welfare of this soul, because this body is not going to get benefited no matter what we feed it with and take its care, but it's going to degrade. So how are we going to work on welfare of the soul? So let me give answer in one word, as there is a question in one word. So this welfare of spirit is only in serving the Lord or performing bhakti. And the next question is, what is the conclusion of all the scriptures? So the conclusion is to chant the holy names. कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
जैसे भारत में अनेकों नदियां बहती है, गंगा, यमुना, As there are so many rivers that flow in Bharatvarsh, like Ganga, Yamuna, etc., and they all meet at sea. Similarly, there are so many Vedic scriptures and they all have so many pastimes, but they all meet at chanting of the holy names. So that is the conclusion of all the scriptures. And the third is Swa Avatara Prayojanam. What is the purpose of taking incarnation of by the Lord? And the fourth is Kim Karm Ke Avtarsha. And what does he do when he come or manifest or incarnates? And please tell us in detail. And finally, the last question, that after Krishna left, where did self-righteousness or dharma personified took the shelter of? So when Krishna left, dharma or self-righteousness personified took the shelter of Bhagavatam. So Suji says that how can I answer such great questions? Then the sages said that we all are aware that you are aware and you know the answers of all these questions as you are omniscient, as you know everything. And you know the element of all these things because you have the mercy of your spiritual master. And what is that principle? If we serve our spiritual master and make him satisfied, then he will share the deepest secret with us. So, similarly, you have satisfied your spiritual master, and his guru is Shukdev Goswami. And he tells that, and they tell that, so you are aware of everything. Suji was satisfied with their query, and when he started the Bhagavatam, then he said a beautiful thing, which we should try to understand. He said that I will repeat whatever I have heard from Acharyas and what I have studied and understood. And what I have experienced, that I will share with you. So I want to indicate one point here to you, that we should listen to the acharyas, then we should try to understand them, and then we should try to experience it, and then we should speak it. So that is the process. If we don't understand it, or we did not follow or experience it, then it will be problematic. So if we want to escape that trap, then we should follow this principle. So Prabhupada used to address sometimes his disciples as rascal. But if we say or we repeat, then people will come to Amrit Charsha. So we should listen, understand, experience, and then speak.
So a person went to an astrologer and said that what is the best time to meet the king. So this was the knowledge, but if we think from practical point of view, it's not possible. So in Gurukul, a spiritual master gave instructions to his two disciples, and he had taught them astrology, and they saw a bird on the tree, and they said, after seeing him, that if there is a yog, then they will get to eat kheer, and they decided that they will get to eat milk pudding. So other disciples said that we will get the rice preparation, but it will be bitter. And after some time they moved and they got the bitter kheer. The bitter porridge. And he said that maybe he was given more knowledge than me. So they complained to his guru that you have given him more knowledge. And as we decided, according to the Shastras or scriptures, we will get bitter porridge or pudding. And he said that I have taught you particularly. So he said that how you decided you will get the porridge. They tell that it according to astrology that if there is such thing that, so I said that we will get the sweet preparation. And then he said that how you decided the yog was to eat kheer. Then but I realized that he is sitting on a neem tree. So that means because neem is bitter, so we will get bitter porridge or pudding. And that is why it became true. So it means that after listening to the scriptures from the Acharyas, we should try to inculcate them in our life and then experience. And when then it is spoken, it enters the heart of the listeners. If we try to listen from our ear, which we have heard from ear, will escape from ear. So that is what Suji said here. शुरू प्रारंभ में ही पूरे भागवत का सार सिद्धांत तीन अध्याय में सुना दिया. In the conclusion is explained by Suji in the 3 chapters, and then he spoke about the 24 incarnations of the Lord, because they have asked, and the primary are 24 which were described. Then in short, the pastime was in short. Then the sages said that please tell us elaborately, and please tell us that how Bhagavatam manifested and when did it manifested. And how did it reach us? And then you tell us in detail. So he said that I will tell you, but tomorrow you have been listening to this Katham with so much love and mellows. So I want to thank you. Especially I want to thank the host family, Manoj Agarwal and Nidhi Agarwal, the organizers, and their mother-in-law, who is in Kathmandu, Nepal.
and all our ancestors. We just remember them all in this Pitru Paksh, and we listen to this Katha with all our heart and concentration so that our ancestors get liberated. So let's listen with for the welfare of our ancestors and us, and conclude the session with Jai Jaikar. श्री कृष्ण चंद्र भगवान की